very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. And you know very well in the last three videos we discussed a new chapter, that is the chapter number 8, issue of debenture. In this chapter, firstly we discussed the issue of debenture for cash, which include the issue of debenture at par, premium and discount. Thereafter we discussed the concept related to the issue of debenture for consideration other than cash, and we can find that the company issued its debenture for purchase of assets or the purchase of the business, and in this situation company can issue this debenture at par, premium or at discount. And thereafter in the last video we can see that the accounting treatment related to the issue of debenture as collateral security, and we can see that when a company takes a loan from a bank or a financial institution, so in this situation such organization can ask to call or to mortgage a secondary security in addition to the primary security, and such secondary security will be known as the issue of debenture as collateral security. In the last video we also discussed the accounting treatment, the method of issue of debenture as collateral security, and we can find that there are basically two methods. The first method in which we could not pass any entry related to the issue of debenture as collateral security, whereas in the second method of issue of for recording the issue of debenture as collateral security, we pass the one entry regarding the issue of debenture as collateral security, and the entry will be debentures suspense account debit to debenture. So in today's video, first of all we revise all the concepts which are related to the issue of debenture as collateral security, and also we revise the two method, and thereafter we will take one of the important numerical topic, one of the important numerical problem related to this topic. So without creating any delay, let's we move to the today's topic, that is issue of debenture as collateral security. So you can see that the accounting treatment of issue of debenture as collateral security, there are basically two methods. The first method in which we could not pass any entry related to the issue of debenture as collateral security, whereas when a company issue a debenture as a collateral security, so in this situation related information shown in the balance sheet of the company. Whereas in the second method you can see that the one entry is common for the first method for the second method, because you know very well issue of debenture as collateral security will be arises only on the occasion of when a company takes a loan from the bank or any other financial institution. So you know very well ये एंट्री पास होना तो कंपलसरी है, चाहे फर्स्ट मेथड हो चाहे सेकंड मेथड, क्योंकि बैंक से जब लोन लेंगे तभी कोलेटरल सिक्योरिटी की बात आएगी. जब बैंक से लोन नहीं लेंगे तो कोलेटरल सिक्योरिटी की बात आएगी नहीं. सो लोन लिया तो वो तो कॉमन एंट्री है, वो फर्स्ट मेथड में भी होगी सेकंड मेथड में होगी, लेकिन ये एंट्री that is debenture suspense account debit to debenture, it will be passed only in the method of second. It will be applicable only in the second method. This entry will not applied in the first method. So आपको एकदम माइंड क्लियर रखना है. सर बेसिकली हमको बताओ क्या करना है. दो एंट्री आप याद कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. दो चीजें आप याद कर लो. इज दैट क्लियर? यस सर, याद हो गया. अब मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे. ये दो एंट्रीज हैं, मैं इसको पहले तो मैं इसको मिड में लिख देता हूं. फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंड द सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. दो एंट्री याद हो गई? यस सर. ओके, ये दो एंट्रीज जो है, अगर हम फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड की बात करें, सो इन द फर्स्ट मेथड द फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड बट सेकंड एंट्री विल नॉट बी पास्ड, whereas in the second method both of the entry will be passed in the books of account. It is totally depend on you कि आप ये मेथड ड्रॉप करो या ये अडॉप्ट करो. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं. जब हम फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने की जगह हम बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन शो करा देंगे, और इसमें हम बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से शो करेंगे. सो बिफोर द discussion the numerical portion regarding the issue of debenture as collateral security, first of all we discussed the rough format of the balance sheet of the company.
इसको पहले आप नोट डाउन कर लो कॉपीज में, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं बैलेंस शीट की, कंपनी की बैलेंस शीट के क्या फॉर्मेट्स होते हैं. Okay, so if we are talking about the balance sheet of company, so company makes its balance sheet in vertical form. वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है. किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर होती है. हेडिंग लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द हेडिंग एंड दिस इज अ रफ फॉर्मेट रिगार्डिंग द. ओके, so I hope it is clear for you. So first of all, when we draw the format of the balance sheet of any company, so this is a particulars, note number, current year rupees and previous year rupees. This is the roughly format of the balance sheet of the company, and it will be started from the first side. The first side will of the balance sheet of the company, that is equity and liability. Equity and liability. Okay, and in this head, in this side, we can see that it is known as the main head of the equity and liability, that is shareholder fund, reserve and surplus, sorry, shareholder fund, non-current liability and current liability. This is a three head, sub head, we can see that this is a head, equity and liability, and these are the sub head. Okay, and the amount will be shown as follows, and this is the equity and liability का total. If we are talking about the second side of the balance sheet of the company, that is an assets, and it will be contain the two head in it, that is non-current assets, and second one is a current assets. So this is a format of the company, and you know very well, liability side is also always equals to the asset side. Previous amount will be equal to the previous asset side, and previous liability, current liability side will be equal to the current. So this is a roughly format of the balance sheet. So first of all, आप heads को याद कर लो. How many heads covered under the equity and liability side? That is three heads: shareholder fund, non-current liability, and current liability. And how many heads covered under the asset side? That is non-current assets and current assets. इसमें हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, पार्ट बी जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट टुडे हमें बैलेंस शीट बनानी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. सो इन सारी चीजों को पहले आप याद कर लो. इसके बाद जब हम इनका इफेक्ट बताएंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इट विल हेल्प्स टू यू टू क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. So I hope you will note down all the formats of the balance sheet of the company, and you can see that the three heads covered under the equity and liability side and two heads covered under the asset side. Okay, so this is the roughly format of the balance sheet of the company. Okay, अब मैं बात करता हूँ डिबेंचर्स की, क्योंकि ये मैंने फॉर्मेट आपको इसीलिए बताया ताकि आप डिबेंचर्स के कंडीशन में आप एंट्रीज पास कर सको. सो लेट्स वी take a whole solution for you. That is, you can see that when a company issued its debenture as collateral security, okay, so we can see that when a company issued its debenture as collateral security, there are basically two methods. The first method, in the first method, we pass the first entry, that is bank account debit, to bank loan.
Okay, and second entry will be passed in the books of account. So you can see that the first method and the second method of recording the issue of debenture as a collateral security, you know very well, in the first method हो चाहे second method हो, दोनों method में common entry will be passed regarding the issue of debenture as collateral security. The entry will be in the first method is bank account debit to bank loan regarding the taking a loan from the bank, and in the second method you have to also pass the journal entry regarding the taking a loan from the bank, that is a bank account debit to bank loan. If we are talking about the those two accounts which are compulsory in the first method and the second method under the debenture issue as collateral security, what are the effect of those two accounts, that is a bank account and bank loan account, on the balance sheet, how it will be recorded in the balance sheet? Let's we discuss it about the transaction of this entry, that is कि बैंक अकाउंट टू बैंक लोन एंट्री पास होती है एज वेल एज सेकंड मेथड में भी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंट्री होती है. तो इन दोनों का इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में? सो यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको बैलेंस शीट शेयर किया था कि हाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट अंडर द companies, for the company. So you can see that if you are talking about the bank account, so bank account affect the asset side under the current assets head and it will write down as a bank. So अगर हम बैंक को शो कराएंगे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में, तो वो होगा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो भी किस हेड के अंदर? करंट एसेट्स के हेड में, बैंक के नाम से. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंक लोन, सो बैंक लोन विल बी रिकॉर्डेड इन द equity and liability side under the non-current liability head regarding the bank loan names. So this is the effect of the first entry on the balance sheet. Now we will discuss the second entry. You know very well, first entry तो compulsory है, वो तो दोनों मेथड में होता है. सेकेंड मेथड में you know very well एक एंट्री और होती है, that is a debenture suspense account debit to debenture. ये एंट्री फर्स्ट मेथड में पास नहीं होती है. दिस एंट्री इज पास्ड ओनली इन द सेकंड मेथड. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एंड द डिबेंचर अकाउंट? सो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इन सब का इफेक्ट देख लें अगर हम अपनी बैलेंस शीट में, तो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट ऑफ दिस एंट्री. सो फर्स्टली यू कैन सी द डिबेंचर सस्पेंस एंड डिबेंचर. सो डिबेंचर को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? डिबेंचर विल बी रिकॉर्डेड अंडर द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड. किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं डिबेंचर को. ओके, और किस हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं? इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटी. If we are talking about the debenture suspense, so debenture suspense will be recorded. Debenture suspense account जो है आपका, it will be recorded under the same head, that is equity and liability side, non-current liability, but it will be deducted from the amount given under the debenture. So you know very well, second method में दो entry pass होती है. First entry which are regarding the taking a loan, and second entry which are related to the issue of debenture as collateral security. And entry will be debenture suspense account debit to debenture. But under the first method, you can pass only the first entry, that is bank account debit to bank loan. And effect, you know very well what is the effect of such account of the balance sheet of the company. And जो second entry pass होती है second method में, उसका effect क्या पड़ता है balance sheet में? So if we are talking about the debenture, so debenture will be shown on the equity and liability side under the non-current liability. ठीक, ये add होता है उसमें जाकर. And when we are talking about the debenture suspense, so debenture suspense will be deducted from the equity and liability side under the non-current liability. Non-current liability में वो value deduct हो जाती है. So this is a summary of the issue of debenture as collateral security
and we could find the better understanding regarding the first method of the recording of debenture of issue as a collateral security, and the second method regarding the issue of debenture as collateral security. So at last we can find that in the first method we passed only first entry, and in the second method we passed two entries. And what are the effect of such accounts on the balance sheet of the company? So we can find that बैंक का क्या इफेक्ट होता है, बैंक लोन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डिबेंचर का क्या इफेक्ट पड़ता है और डिबेंचर सस्पेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है. एज वेल एज वी कैन सी दैट कि हम लोगों ने अभी लास्ट इससे पहले कुछ मिनटों पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि हाउ कंपनी मेक्स अ बैलेंस शीट. सो लेट्स वी टेक अ वन numerical question to creating a better understanding. Okay, so the question is, A Limited company took a loan of rupees 20,000 from a bank and deposited 306% debenture of rupees 100 each as a collateral security. The company after 1 month again took a loan of rupees 60,000 from a bank and deposited 706% debenture of 100 each as a collateral security. Give necessary journal entries in the books of the company and prepare a balance sheet. So first of all we solve the illustration number 17 by the following first method with the help of the first method, and thereafter we solve the illustration number second with the help of second method. So first of all we solve this question with by first method, issue of debenture as a collateral security, issue of debentures as a collateral security. Okay, and firstly we solve this question with the help of the first method. Okay, so you can see that according to the question, A Limited company took a loan of rupees 20,000 from a bank and deposited 306% debenture of 100 each as a collateral security, and again after 1 month company take a loan of rupees 60,000 from a bank and deposited 7% 6% debenture of rupees 100 each as a collateral security. तो कंपनी ने क्या किया, दो बार लोन लिया, एक बार लोन नहीं लिया. Company takes a loan for 2 times, so the first journal entry will be passed as bank account debit to bank loan. Okay, and what is the amount of loan? That is 20,000. And thereafter company, इसका नरेशन का बिंग, company takes loan and issue how many debentures? 6% debenture, issue 6% debenture as collateral security. 6% debenture और कितने परसेंट डिबेंचर है? 300, that is 300 डिबेंचर है ना, 6% डिबेंचर at the rate of 100 each as collateral security. So you can see that the first entry which are related to the taken a loan for the first time from the company. तो पहली बार कंपनी ने लोन लिया और कितना इशू किया? 306% डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. अगेन कंपनी टेक्स आफ्टर 1 month, अगेन कंपनी टेक्स अ लोन. सो अगेन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. The amount of the loan is 60,000, and in this situation company issue, फिर यहाँ पे नरेशन क्या होगा? बैंक कंपनी टेक्स अ लोन एंड इशू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इशू हाउ मच डिबेंचर्स? दैट इज 700 डिबेंचर, 6% डिबेंचर at the rate 100 each as a collateral security. So you can see that the two entry which are
passed at the time of issue of debenture as a collateral security by the help of first method. Okay, so you can see that जब हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं सो वी पास ओनली द एंट्रीज रिलेटेड टू द टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। जो दूसरी एंट्री थी याद होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इनटू एंड डिबेंचर, ये पास नहीं होती। ये एंट्री तब पास होती है जब हम लोग यहाँ फर्स्ट मेथड की जगह क्या लेते हो, सेकेंड मेथड फॉलो करते हो। सो यू कैन सी दैट ये एंट्री क्लियर हो गई। यस सर, ये एंट्री क्लियर हो गई। तो फर्स्ट मेथड में कितनी एंट्री पास होगी, ओनली 2 एंट्री, बिकॉज कंपनी ने क्या किया है, 2 बार लोन लिया, एक बार लोन नहीं लिया, 2 बार लोन लिया, 2 बार आपने एंट्री पास कर दी। ओके, कंपनी ने इशू किया डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी, यस, पहली बार में 300 डिबेंचर इशू किया है, दूसरी बार में उसने 700 डिबेंचर इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, बट कंपनी उसको रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में तो उसकी एंट्री पास नहीं करती है बेसिकली। अब इससे रिलेटेड आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे इन दिस सिचुएशन, तो अब हम इसका बैलेंस शीट बना देते हैं फर्स्ट मेथड का। सो प्लीज नोट डाउन दिस 2 एंट्रीज, क्योंकि इसी एंट्री की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, यस, बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल बैंक कहां रिकॉर्ड होगा, बैंक, दोनों बैंक रिकॉर्ड होगा, दैट इज एसेट साइड करंट एसेट्स के हेड में, और बैंक लोन कहां रिकॉर्ड होगा, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के किस हेड में, नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, सो मैं रिमूव करता हूं ये एंट्री। अब मैं फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी उस पर मैं फोकस करता हूं। So how we will prepare the balance sheet of, कौन सी कंपनी है, कंपनी का क्या नाम है, दैट इज ए लिमिटेड। फॉर्मेट बना लेते हैं। यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट में अमाउंट के कितने कॉलम होते हैं कंपनी के, 2 कॉलम। द फर्स्ट कॉलम विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर एंड सेकंड कॉलम विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। सो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, you know very well, and current year amount and previous year amount। मैंने आपको जब बैलेंस शीट बनाया था कंपनी का तो आपको सब कुछ बताया था। इसमें हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज नहीं होता है बैलेंस शीट कंपनी का, कंपनी के केस में बैलेंस शीट वर्टिकली प्रिपेयर होती है। इसमें जो पहला हेड होता है वो होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, या साइड कह लो, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने हेड होते हैं, दैट इज शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, और बैंक लोन कहां रिकॉर्ड होगा, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी में। तो हमें जो भी ये चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड में तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड होगा, बैंक लोन। और बैंक लोन कितनी बार लिया है कंपनी ने, कंपनी टेक्स अ बैंक लोन 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जो बैंक लोन लिया गया है वो 20,000 का है, दूसरी बार जो बैंक लोन लिया गया है वो भी 60,000 रुपीज का। टोटल बैंक लोन अमाउंट विल बी 80,000। ओके, एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू कुछ नहीं है, सो आप उसको लिख भी सकते हैं, ये हेड्स हैं। ओके, इसके आप ए बी सी नाम भी दे सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए, और ये आइटम्स हैं, यानी नॉन करंट लायबिलिटी में आपने क्या रिकॉर्ड किया, बैंक लोन को रिकॉर्ड किया। शेयर होल्डर फंड में कोई अमाउंट नहीं है, करंट लायबिलिटी में कोई अमाउंट नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना क्या है, बैंक लोन। इट इज नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन, ये भी याद रखना है आपको, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन मींस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज हमें उतनी ही बैलेंस शीट बनानी है जितना कि हमको जरूरत है, जितना हमने जर्नल एंट्री पास किया है। और दूसरा हेड क्या होता है, दैट इज एसेट्स। सो एसेट्स में क्या रिकॉर्ड होगा, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या रिकॉर्ड होता है, बैंक, और बैंक की वैल्यू कितनी है, दैट इज 80,000। एंड यू नो वेरी वेल यहां पर आपका जाकर टोटल कंप्लीट होता है। सो ये हो गया 80,000, यहाँ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यहाँ नॉन करंट एसेट्स कुछ नहीं है, सो यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे, टोटल कर। सो यू विल कंप्लीटेड द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी so you can see that how company prepares balance sheet when he issue of debenture, when he issue its debenture as a collateral security, and this balance sheet is prepared with the first method। first method में हम कैसे balance sheet prepare करेंगे, you can see that we record only the bank loan and bank amount in the side,
But the main fact regarding the issue of the debenture as a collateral security is that इसमें आपको यहां पर शो करना पड़ेगा, बैंक के ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा कि आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी. सो यू कैन सी दैट आपने फर्स्ट टाइम में कितना डिबेंचर इशू किया था 300, दूसरे टाइम में कितना डिबेंचर इशू किया था दैट इज 700, टोटल कितने डिबेंचर्स थे 1000. तो आपको बैंक में या बैंक लोन के ब्रैकेट में इट इज क्लियरली गिवन, आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. आप मैं यहां लिख के दिखा दे रहा हूं कि बैंक के ब्रैकेट में क्या लिखा होंगे आप लोग, कि आपको यहां शो कराना पड़ेगा ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर, ऑन collateral security of debenture for rupees 1 lakh. So ये आपको शो करना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट में कि you will issue issue of 1000 debenture of rupees 100 each as a collateral security of rupees 1 lakh. So you can clearly see that कि जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड फॉलो द फर्स्ट मेथड, सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है एंड देयर आफ्टर यू विल टेक अ हेड ऑफ द नेम एंड यू कैन सी दैट शेयर होल्डर में कोई अमाउंट नहीं है. नॉन करेंट लायबिलिटी में आप रिकॉर्ड करते हो बैंक लोन, करंट लायबिलिटी में आपने क्या रिकॉर्ड कर, कुछ नहीं रिकॉर्ड करना है क्योंकि करंट नॉन करंट एसेट में कुछ नहीं है, करंट एसेट में आपको रिकॉर्ड करना है बैंक. यानी आप सिर्फ 4 एंट्री पास किए थे, उसमें बैंक लोन एक बार था 60-20, ये भी था 60-20 से, तो टोटल अमाउंट ऑफ बैंक एंड बैंक लोन इज 80,000. एंड देयर आफ्टर आपको पता है कि फर्स्ट मेथड में हम डिबेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको रिकॉर्ड नहीं करते. सर रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या करते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट आप बैंक लोन के नीचे भी और बैंक के नीचे भी आप एज अ इंफॉर्मेशन इनर कॉलम में लिख दोगे ताकि कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट उठाकर देखे सो ही विल फेस कि यस कि वी टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड इशू अ कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर फॉर रुपीज 1 लाख. क्योंकि टोटल डिबेंचर कितना इशू हुआ 700 प्लस 300. अगर आप देखो फर्स्ट टाइम में आपने 300 डिबेंचर इशू किया था, दूसरे टाइम में आपने 700, तो टोटल डिबेंचर कितने हुए 1000. एक डिबेंचर कितने का था 100 रुपए का. द टोटल इशू ऑफ अमाउंट ऑफ द डिबेंचर इज 1 लाख. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल फोकस ऑन द सेकेंड मेथड. ओके, और सेकेंड मेथड की बैलेंस शीट आपको खुद बनानी होगी या मैं बना दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, let's we so you can see that the very important topic of the chapter number 9, that is issue of debenture, and the topic is issue of debenture as a collateral security. In this topic we can see that company have a two option to record of issue of debenture as a collateral security. The first, under the first method, you can see that company record only the entry related to the taking a loan from the bank, that is a bank account debit to bank loan. And when a company issue a debenture as a collateral security, so such journal entry will not be passed in the books of account. And you can see that how company prepared the balance sheet under the first situation, यानी company first situation में कैसे balance sheet बनाती है first method के according. And you can see that only two accounts affect the balance sheet of the company. The first account is a bank account which affects the asset side of the balance sheet of the current liabilities head, यानी सिर्फ current liabilities head को affect करता है. And when we are talking about the bank's loan account, so it affect the equity and liability side of the balance sheet of the company, which included under the head of non-current liability. And the entries related to the issue of debenture as collateral security will not be passed under the first head. So in the next video we will talking about the second method of the issue of debenture as a collateral securities. We take a same problem, same question for the next video and make a journal entries and make a balance sheet of the company with the help of same question. So उस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि
नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कंपनी सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या जेन्युइनिटी पास करती है, और सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग कंपनी कैसे बैलेंस शीट बनाती है. And you know very well, in the second method, the company passed the two entry, the first entry which are related to the taking a loan, and second entry which are related to the issue of debenture as collateral securities, and in fact the balance sheet also. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, and take care, and please make a proper notes in your copy, as well as please solve all the practical problem given on your book. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot, take care.